Hello everyone. Good morning. I hope you are fine. Today we are starting with our next topic of the class. Yesterday we discussed their force and their inertia and laws of inertia also discussed. Then there is a three laws we discussed: their inertia due to rest, inertia due to motion, inertia due to direction. So today we will discuss their laws of motion that are the given by the Newton. Okay, किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे. Isaac Newton given. Then today we will discuss laws of motion. Then first law also told yesterday. First law is explaining about there, if external force will be zero, then body will be remain in same position, means if it is at rest only, then it will be remain at rest. If it is moving in uniform motion, then it will remain in uniform motion only. Okay, that is known as the first law of the motion. So here that is given by these laws given by Isaac Newton. Then three law given by this one. Then first law of motion. First law of motion. This one, if your body will be at rest, ये क्या कहता है कि अगर body rest में है, if external force we are not applying, then body will be in same situation. Body will be remain uniform motion only if it is moving in uniform motion. So next we will discuss their second law of motion today. Second law of motion given by the Newton. Then सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करे तो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करे तो जैसी बॉडी है वैसी ही रहेगी. ऑब्जेक्ट जैसे रेस्ट में है तो रेस्ट में ही पड़ा रहेगा. अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म ही मूव करता रहेगा. दैट इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन. ओके, नेक्स्ट वन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इफ वी आर एक्सटर्नल फोर्स वी आर अप्लाइंग, देन व्हाट हैपन? ओके, इफ एक्सटर्नल फोर्स वी आर अप्लाइंग, देन बॉडी विल बी स्टार्ट एक्सेलरेटिंग. ओके, बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस वन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट देयर, इफ एक्सटर्नल फोर्स applied on the body, on object, then object will start accelerating. Then that is known as a second law of the motion. कि बॉडी के ऊपर क्या है? अगर ये हमने ऑब्जेक्ट ले रखा है, दिस ऑब्जेक्ट इज देयर, इफ ऑब्जेक्ट वी आर टेकिंग दिस वन, then this object on this one we are applying their external force, then body will start accelerating. Okay, their change in momentum will be take place. So here we can write their change in momentum. We can say change in momentum take place. Clear? So here first we should know about their momentum. Now what is momentum? Momentum, it is the product. What? It is the product of mass of object and velocity. Product of mass and velocity by which this object is moving. So here this object is there. If its mass is m moving with your v velocity, then momentum we can write there. Momentum its symbol will be equal to your p. Okay, किसको डिनोट करते हैं? p लेटर से डिनोट करते हैं. So momentum we can write there mass into velocity. Mass into velocity. Okay, so mass into, we can write there P equal to mv. This one will be our momentum.
So here by using this one formula we can write there its SI unit will be equal to its SI unit its SI unit their formula is mass into velocity. Mass को हम कैसे represent करेंगे kg and velocity we can write there meter per second means second minus 1. This one we can write there mass into velocity kg meter per second. And second it is a depend upon mass is a scalar quantity, v is a velocity. अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है. सो मोमेंटम क्या हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज vector quantity. Vector quantity means having direction as well as the magnitude because it depend upon the velocity and velocity is vector quantity. ये हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये मोमेंटम भी हमारी इस बिहाफ पे क्या रहेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी और इसकी यूनिट क्या रहेगी, मास केजी मीटर पर सेकंड. ओके, सो दिस वन आवर मोमेंटम. किसी बॉडी का अगर मास होगा, उस मास वाली बॉडी को अगर हम मूव करवा रहे हैं दैट मींस देयर मोमेंटम इज टेक प्लेस ऑफ दिस बॉडी. सो दिस वन आवर मोमेंटम. तो सेकंड लॉ हम डिस्कस कर रहे थे. सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स वी आर अप्लाइंग देयर, okay, if external force we are applying there then it will be directly proportional to the rate of change of momentum. Second law क्या कहता है, again I am telling you second law of momentum that if external force external force applied on body then it will be equal to rate of change of linear momentum. That is known as the second law of motion. Okay, momentum written here by mistake. Second law of motion. Okay, इसको हम force भी कह सकते हैं. That is a definition of force. Force को हमने अभी तक define किया. That is push or pull is known as the force. Now we can say force is equal to rate of change of momentum also is known as the force. Okay, so rate of change of momentum is known as the force. Here we can write this one mathematically. This one expression we can write like this one. इसको इसी फॉर्म में we can write there F will be directly proportional to the rate of change of momentum. For example, if body is here, initially its velocity is u and mass is m. After some time its velocity will be changed. अगर velocity vary करेगी क्या mass vary करेगा? No. Okay, if this one will be reach here, its mass will be remain same, its velocity becomes v. So initially it is moving from here to there. कहाँ से कहाँ तक मूव किया इसने, यहाँ से यहाँ तक मूव किया. इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी क्या हो गई v. ओके, सो हियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दिस वन and this becomes our final momentum with final velocity. Clear? Initial momentum we can write there p initial momentum mass into our initial velocity, and final momentum we can write there mass into our final velocity. So here we can write their initial momentum pu and this one your final momentum mv. So this one according to second law we can say force, external force which we are applying on this one body. हमने क्या किया था, external force इसके ऊपर अप्लाई किया, बाहर से अप्लाई किया, क्या फिर अप्लाई करने के क्या बाद क्या हुआ, वो बॉडी यूनिफॉर्मली मूव ना करके क्या कर रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है. ओके, चेंज इन वेलोसिटी इज टेक प्लेस. Acceleration we have done already, change in velocity will take place means body is accelerating there. So here if initially it is moving u, first law क्या कहता है कि जब तक हम ये फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, अगर ये u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो u वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहेगा कॉन्टिन्यूअसली. ओके, बट सेकंड लॉ उसके बाद क्या है, न्यूटन ने कहा कि अगर फोर्स अप्लाई करे तो क्या होगा. ओके, इफ वी आर अप्लाइंग, फिर वो कहता है कि अगर इसको फोर्स ना अप्लाई करने को, दैट इज फर्स्ट लॉ. अब सेकंड लॉ में वो डिफाइन करे कि अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इस वेलोसिटी का क्या होगा.
So after this one we are applying external force, then its velocity will be change. Okay, let its change in the velocity will be take place v. कितना चेंज आया, v चेंज आया, तो इसके अलोंग हमारी मोमेंटम क्या हो जाएगी, पी आई. ओके, इनिशियल मोमेंटम and pf will be final momentum. Okay, so here we can write this one. So external force, let, here we can write there, let pi equal to initial momentum, okay, that is equal to your pi equal to mu, and pf we are writing there final momentum. फाइनल मोमेंटम, डेस्टिनेशन पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा, उस चेंज के अलोंग हमारी मोमेंटम में जो चेंज आता है, दैट वी विल कॉल इट फाइनल मोमेंटम. उसको क्या बोलेंगे, फाइनल मोमेंटम. सो हियर इफ दिस वन वी कैन राइट देयर, नाउ external force we can write directly proportional to the change in momentum. What? Change in momentum पर यूनिट टाइम, या तो यूं कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, या यू कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू आवर एक्सटर्नल फोर्स. किसके इक्वल होगा, ये हमारे एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. So as we are applying this one, so here we can write there F will be directly proportional to change in momentum. How much changes take place? Final momentum minus initial momentum. Clear? Final minus initial momentum. Divide by here, final minus initial divide by our time. I hope you understood बेटा. ओके, सिर्फ हमने क्या अप्लाई किया है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा. वेलोसिटी में चेंज आएगा तो हमने क्या था, सेकंड लॉ कहता है उसकी मोमेंटम में चेंज आता है. वही मोमेंटम हम फाइंड कर रहे हैं कि कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा जो लास्ट में जो है उसमें से पहले वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी क्या होगी, जितनी मोमेंटम में चेंज आया वो निकल जाएगा. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं 10 रुपए की क्या लेने गई, टॉफी लेने गई. ओके, 20 रुपीज मैंने उसको दिए, रिटर्न में कितना देगा, 20 माइनस 10 ही तो रिटर्न करेगा ना, 10. ओके, कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल. अंडरस्टूड? ओके, सो हियर फाइनल p momentum, final minus initial momentum. Now we are putting this one, value of this one, f is directly proportional to the p final, we can write there mv minus initial mu divided by our t. क्लियर? सो हियर प्रोपोर्शनल साइन इज देयर. अब हमें पता प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के बाद हमेशा क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं. एज वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनल साइन, देन हियर वी विल टेक अ वन कांस्टेंट, देन रिमेनिंग टर्म वी विल राइट देयर एज इट इज माइनस mu डिवाइड बाय आवर t. ओके, k will be remain constant only, where we can write there where k equal to our 1. k को हम 1 पुट करें, so external force we can write there, m we can take outside, so inside left v minus u by t. Clear? Understood? Okay, now v minus u by t, any relation you have done already? Okay, we have done by equation, as we know using first equation of motion. हमने क्या था, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया था. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब यहां से क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, v माइनस यू बाई टी इक्वल टू आवर a. एक्सेलरेशन, दिस वन फर्स्ट इक्वेशन u इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो आउट ऑफ दिस वन हमने क्या था, ये वाला रिलेशन सोल्व किया, v माइनस यू बाई टी किसके इक्वल होता है. सो दिस वन रिलेशन वी कैन राइट दैट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन. सो पुट हियर, देन हियर वी कैन राइट देयर, आफ्टर पुटिंग, देन हियर will become there f external. Put here we can write their first equation, put value of a in equation first.
ओके, फर्स्ट वैल्यू ए की वैल्यू क्या हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. आफ्टर पुटिंग देन हियर सेकंड इक्वेशन यू कैन राइट देयर, नॉट ए तो हमें पुट ही करना है ना. पुट वैल्यू ऑफ put value of equation second in first equation. Second equation की जो value आई है, this one value we are putting equal to a, so we will put here. Now f external we can write there, f external, then mass we will write there as it is v minus u by t, that we can write there a. So this one our came f external equal to ma. Okay, so this one external force we will write this one, but beta keep in mind, if someone is asked about the definition of the force, then we can't say it equal to m equal to ma. Second लो ये नहीं कहता force equal to ma. Okay, that exact form is this one. External force will be equal to rate of change of momentum, is known as second law of the motion, not like this one ma, because this one ma, this one formula we are applying for a one condition. ये condition पे होता है this one, your f external equal to ma at which mass remain constant. मास क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है. अगर मास वेरी करेगा, इफ मास विल बी वेरी देयर, देन वी कांट राइट f इक्वल टू ma. ओके, ये रिलेशन क्या है, एक कंडीशन पे जब अगर मास क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, बॉडी इधर से उधर जा रही है, मास क्या रहेगा, रिमेन सेम, देन वी कैन अप्लाई देयर एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ma. अगर किसी केस में मास चेंज हो रहा, फॉर एग्जांपल बलून को ब्लो किया, एज वी विल लीव इट, देन एयर विल बी कम आउट फ्रॉम द बलून. ओके, क्या हो जाएगा, बलून फुस हो जाएगा. फुस हुआ तो क्या हुआ, मतलब उसमें से एयर निकल गई, एयर निकली तो कुछ ना कुछ मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. अगर मास डिक्रीज हो रहा है, उस केस में हम फोर्स निकालने के लिए ये रिलेशन हम यूज नहीं कर सकते. दिस वन रिलेशन इन प्रॉपरली यू विल रीड इन 11th क्लास बेटा बाय यूज differentiation integration method. So in 9th till this only f external equal to ma. Okay, so remain keep in mind that this one formula will be for constant mass, not always will be possible. Exact formula of this force will be change in momentum per unit time, that is known as the external force. Okay, I hope you understood beta second law of the motion. According to second law of the motion, that is external force will be directly proportional to the rate of change of मोमेंटम. यू कैन से अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी. एक्सटर्नल फोर्स वी आर अप्लाइंग, देन बॉडी विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग. ओके, चेंज इन वेलोसिटी विल बी टेक प्लेस. अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा तो उसका मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो का मीनिंग क्या है, फोर्स उस पे क्या है, जीरो है. क्लियर, कि अगर मैं कहूं कि बॉडी इज मूविंग इनिशियली विद 3 मीटर पर सेकेंड, की एक ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रहा है, फाइंड देयर फोर्स. ओके, आफ्टर दी सम टाइम इट्स वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड ओनली. सॉरी, कि इनिशियली कोई बॉडी है 3 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव कर रही, कुछ टाइम के बाद क्या उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ही है, तो आपको निकालना फोर्स. अब फोर्स क्या मैंने बताया क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू ma. अब बॉडी क्या है, एक्सेलरेट, चेंज इन वेलोसिटी इज टेक प्लेस. एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर टाइम के साथ वेलोसिटी में वेरिएशन होगा तो एक्सेलरेट करेगी बॉडी. अगर एक्सेलरेट ही नहीं करेगी तो फोर्स भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा. अब इस केस में क्या बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, यहाँ भी 3 है, कुछ टाइम के बाद भी 3 है. अब 3 में से 3 क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, सो एक्सेलरेशन अगर हम यहाँ निकाले तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. सो दिस वन टर्म ए कमिंग्स आवर जीरो, बिकॉज चेंज इज देयर, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है. यूनिफॉर्म करने का मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या रहेगी, जीरो. अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा, कि अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती, एक्सटर्नल फोर्स क्या करता है, जीरो रहता है. अपोजिट भी, इसका अपोजिट सेकंड लॉ क्या कहता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स वी विल अप्लाई देयर, देन बॉडी विल बी स्टार्ट एक्सेलरेटिंग. ओके, दिस वन आवर सेकंड लॉ ऑफ द मोशन. ओके, नाउ लेट अस वी विल डू सम क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर an object of mass 10 kg is moving initially
with 5 meter per second for 20 seconds. Okay, then find force if finally it will stop. क्लियर, कह रहा है कि फाइंड फोर्स फाइंड करो अगर वो फाइनली क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया बेटा, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्राम में क्या क्या दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या गिवन है, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन दिस वन सरफेस एंड इट्स मास इज गिवन 10 kg। क्या गिवन है, 10 kg मास गिवन इस बॉडी का। ओके, मूविंग इनिशियली विद 5 मीटर पर सेकेंड, मींस इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्या गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या है, 20 सेकंड के लिए क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ओके, ट्रैवलिंग 20 सेकंड, क्या कर रहा है, 20 सेकंड के लिए वो ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम हियर टू टिल 20 सेकंड ट्रैवलिंग, देन रीच हियर, कहाँ पहुंच गया, इधर पहुंच गया। तो यहाँ पे आके क्या कह रहा है, वो स्टॉप हो रहा है। स्टॉप होने का मीनिंग क्या है कि फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई उसकी, 0। यस ना, कि फाइनली हमें फोर्स निकालना है, फाइनली इट विल स्टॉप, कितना फोर्स लगाएं कि वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। सो फोर्स, हाउ वी कैन फाइंड देयर, फर्स्ट वी शुड नो अबाउट देयर फोर्स। फर्स्ट राइट देयर गिवन फैक्टर्स, क्या क्या गिवन है, हमें मास गिवन है। ओके बेटा, कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करो, पहले रीड करो उसको अच्छे से, रीड करने के बाद ट्राई करो उसको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, डायग्राम में उसको समझो कैसे निकालना है, कहां से कहां बॉडी चल रही है, देन यू विल फील इजी दैट यू कैन सोल्व इट। देन मास इक्वल टू 10 kg। ओके, मास गिवन हमारे पास 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू आवर 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। उसके बाद कह रहा है 20 सेकेंड के लिए वो मूव कर रही है। सो टाइम इक्वल टू आवर 20 सेकेंड, इट इज मूविंग फॉर द 20 सेकेंड के लिए मूव किया। देन फाइंड द फोर्स, फाइनली इट विल स्टॉप, क्या कर रही है, फाइनली वो स्टॉप कर रही है। सो v इक्वल टू दिस वन, t इक्वल टू दिस वन, फाइनली इट विल स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी वी कैन राइट देयर g। नाउ यूजिंग दिस फैक्टर ओनली, नाउ here we have to find out force। अब हमें क्या निकालना, फोर्स निकालना। कैसे निकालेंगे फोर्स, अब हमें पता है, फर्स्ट वी शुड नो अबाउट दिस वन, फोर्स इक्वल टू यार ma, यही कहता है। अब इसके लिए मास तो गिवन है बट एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। अब एक्सेलरेशन के लिए इन क्वांटिटीज को यूज करते हुए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, और यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन फाइंड करते हुए हमें ये फैक्टर यूज करने, u t v, these factors, using these factor then first find a। तो कैसे निकालेंगे, by using first equation of a, by using first equation of motion, by using first equation of motion क्या कहती है, v minus u equal to at, v equal to u plus at, इनको इधर ले आओ, then v minus u equal to at। तो a क्या आ जाएगा हमारे पास, v minus u by t। So put value of these terms, a we can write there, finally it becomes your stop, then v equal to 0 minus u equal to your 5 meter, 5 will be there, divide by your time is your 20 second, so it will come your 5 by 20। so solve this one, now here will come minus 1 by 4 meter per second square, write always SI unit of each quantity। okay, because these are the identification of each quantity like our name। okay, जैसे हमारे नेम होते हैं हमारे आइडेंटिफिकेशन, उसी तरह से इनकी यूनिट भी इनकी आइडेंटिटी होती है। विदाउट ऐसा यूनिट डोंट राइट। ओके, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव का मीनिंग क्या रहेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव का मीनिंग क्या है, रिटार्डेशन इज टेक प्लेस। ओके, कि रिटार्डेशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, बॉडी क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, एक्सेलरेट क्या कर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रही है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गई। उसके बाद क्या हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, F इक्वल टू ma, देन मास इज गिवन आवर 20, a हमारे पास क्या आया, सॉरी 10 गिवन है मास, 10 इंटू 1/4। ओके,
So here 10 mass is given in our question, 10 into your 1 by 4. So here solve this one, 5 2, then it will be 5 by 2. That is Newton. फोर्स निकाल रहे थे ना, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. 2.5 न्यूटन. अदर यूनिट ऑल्सो वी कैन राइट देयर 2.5 by using this formula kg meter per second square. This also you can write the unit of the force. Okay, so I hope you understood beta how you can apply their force F equal to ma in any question. For example, one more question you can try. One more question we can try. Let here mass of this body, graphical question we are doing there. Okay, graph question हम use कर रहे हैं. Question is there in velocity time graph. Time graph. In velocity time graph, VT graph is given 0, 1, 2, 3, 4 second. Okay, velocity meter per second. Here we are using 2, 4, 6, 8 meter per second. So your curve is there. Your curve is there. Zero, P, Q, R. ये curve. Okay. In graph, we have to find the force. Here write find force F using VT graph. Using VT graph, if mass of body is 10 kg. Okay, along PR. ओके, P से R तक का जो पाथ है उसके अलोंग कह रहा है फाइंड देयर फोर्स. क्लियर? अगर कोई गाड़ी है यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है, P पॉइंट पे क्या पोजीशन है, 2 सेकंड में वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है? 8 मीटर पर सेकंड. आफ्टर सम टाइम इट विल रीच ऑन R and on R then its velocity becomes 0 but time is 4 seconds. तो ड्यूरिंग दिस वन P to R वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स. हमें फोर्स निकालना इस ग्राफ को यूज करते हुए. सो यूजिंग ग्राफिकल मेथड देन वी विल यूज फर्स्ट राइट द फॉर्मूला बेटा. हाउ वी कैन ड्राइव दिस वन? फॉर्मूला यूज करेंगे. फॉर्मूला यूज करते हुए हमें पता होना चाहिए कि फोर्स निकलेगा कैसे. सो फोर्स के लिए बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ, बाय यूजिंग न्यूटन्स सेकंड लॉ, then force equation we can write there F equal to ma. This one our force equation F equal to ma. तो यही हमें निकालना है इस ग्राफ को यूज करते हुए. अब फर्स्ट चेक देयर विच क्वांटिटी नीड देयर. हमें मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए. मास इज गिवन इन आवर क्वेश्चन 10 kg बट एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन. सो एक्सेलरेशन हाउ यू कैन फाइंड? ग्राफ इज गिवन ऑफ वेलोसिटी टाइप ग्राफ. इन लास्ट चैप्टर बेटा वी डिस्कस देयर ग्राफ गिवन है तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं इन VT ग्राफ. VT ग्राफ के अंदर इफ एक्सेलरेशन यू वांट टू फाइंड आउट in velocity time graph, in velocity time graph acceleration कैसे निकलेगी? by using slope. Okay, so mass is given, then by using this one graph then acceleration will be equal to slope of this curve, slope of curve. Okay, and slope, what will be slope? Change along your y axis. Final minus initial velocity, change along x axis. फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, दैट इज आवर एक्सेलरेशन. क्लियर? यही फॉर्मूला हमें इसके अंदर ग्राफ के अंदर यूज करना है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए. तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर एक्सेलरेशन को? सो हाउ वी कैन फाइंड दिस वन? ए विल बी इक्वल टू, ओके, ए विल बी इक्वल टू आवर
then a will be change in our velocity per unit change in time. acceleration यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से final velocity, final minus initial. so a v will be for value of a in graph velocity time graph. ओके तो हमारे पास a क्या आ जाएगी, a इक्वल टू आवर चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आवर a. किस ग्राफ के, p टू r चाहिए थी ना, सो डिवाइड बाय फाइनल टाइम इज 4, इनिशियल टाइम इज इक्वल टू आवर, इनिशियल टाइम इज इक्वल टू योर ऑन q पॉइंट, p के नीचे क्या q पॉइंट क्या है 2 सेकेंड. सो हियर -8/2. इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये क्या आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन आ गई, रिटार्डेशन फिर से नेगेटिव आया, नेगेटिव का मतलब है एट द एंड इट विल बी स्लो. हमारी जो फाइनली वेलोसिटी क्या आ रही है, 0 आ रही है. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 आ जाएगा. सो फोर्स हियर वी कैन राइट देयर. नाउ m इज गिवन हियर 10 kg, m क्या गिवन है 10 kg. तो हमारे पास फोर्स क्या आ जाएगा, now F equal to ma, so your force equal to your mass 10 kg into acceleration. acceleration solve करने के बाद क्या आई हमारे पास, 4 meter per second square. now using this one 4, now here will be your 40 meter Newton, here 40 Newton. तो ये था बेटा क्वेश्चन. अगर आपको ग्राफ गिवन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अगर आपको फोर्स फाइंड करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करते हुए फोर्स फाइंड करना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जरूरत क्या पड़ेगी उस एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए. तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग देयर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके स्लोप निकालेंगे, रेशियो ऑफ अलोंग चेंज अलोंग वाई एक्सिस टू दी एक्स एक्सिस. इस रेशियो को यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए पुट करेंगे, ए पुट करने के बाद मास हमारा ऑलरेडी गिवन है, सो यूज देयर एफ इक्वल टू एम ए बाय न्यूटन सेकंड लॉ. तो फोर्स हमारे पास निकल के आ जाएगा एंड दैट लाइक दिस वन वी कैन सोल्व. सो वी डिस्कस बेटा 2 क्वेश्चन रिलेटेड विद आवर न्यूटन सेकंड लॉ. आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. सो टुमारो वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट लॉ, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे आवर वीडियो.